Hey guys, welcome to Kela Adventure. I'm your host and host Yogesh. As you all know that there is a lockdown around the world and we are not allowed to go out and do any sort of trekking or any travel. You need a lot of permissions and definitely nobody wants to take any sort of risk. So Kela Adventure Boys ने सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए एक वीडियो कंपाइलेशन बनाया जाए जिसमें हम वर्ल्ड के टॉप ट्रैकिंग प्लेसेस को कवर करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि what sort of precautions, what are the best practices that you need to take while going on these treks. So whenever things goes back to normal and you feel safe enough to go for these trekking places, you can definitely use this information to make your trekking much more comfortable. So आज जो हम ट्रैकिंग कवर करने जा रहे हैं that is Everest Base Camp. So basically in 2017 Kela Adventure Boys ने ये ट्रैक ट्राई किया था and we have done this successfully. We were able to reach to the base camp and that was one of the most amazing and memorable trek I ever had. I'll give you some of the information. I'll tell you like what all different precautions that you need to take, what are different facts and figure about this trekking. And Everest is such an amazing place. I mean, once you will be there, you'll be like in a different world altogether. So the experience is amazing, I must say. So before हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, I want all of you to subscribe to my channel and make sure that you are updated with our upcoming videos. So guys, जो first important चीज है that is your sleeping bag. So I know many of you were thinking sleeping bag, अरे ये इतना important है क्या? But yes, a sleeping bag, a good sleeping bag is a must if you're going for any trek which is in a higher altitude. So it's very much required because क्या होता है कि अगर वहाँ पे आपको साउंड स्लीप नहीं मिलती है, अगर वहाँ पे आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो, so definitely next day you're going to face a lot of problem. और हाई एल्टीट्यूड में यू नो लाइक काफी लोगों को एक्लिमेटाइज करने में, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने में टाइम नहीं लगता है. सो sleeping bags are very important. You have to make sure that you are carrying a good quality sleeping bag. कई लोग काठमांडू में जाके रेंट आउट भी करते हैं, बट मेक श्योर दैट जब आप रेंट आउट कर रहे हो स्लीपिंग बैग, you get into that sleeping bag, make sure that you are comfortable enough, make sure that the quality of sleeping bag is good so that you don't face problem when you go to the higher altitude more than 3,500 meters. So that's very much required. The second tip is to make sure that you are acclimatizing at the right interval of time. So first point is नामचे बाजार, because आप एकदम से हाइट गेन करते हो and it's very much required कि आप नामचे बाजार में जरूर एक रेस्ट लो. सेकेंड पॉइंट इज डेंगोचे, वहाँ पे भी रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप 4000 मीटर से ऊपर जा चुके होते हैं. कई लोगों को वहाँ पे काफ़ी फटीकनेस होती है, कई लोग वहाँ पे बीमार पड़ते हैं, कई लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अ प्रॉपर रेस्ट एट दीज 2 पॉइंट्स. सो ऑलवेज फॉलो द आइटनरीज विच आर गिवन बाय योर ऑर्गेनाइजर. आपके साथ जो भी गाइड है, मेक श्योर दैट ही इज ऑल्सो फॉलोइंग दोज आइटनरी एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट बिफोर गेनिंग एनी सॉर्ट ऑफ हाइट. सो इट्स प्रीटी मच रिक्वायर्ड. इफ यू डोंट टेक रेस्ट, डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी एंड देन यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट दिस ट्रैक. Now the third important point is a proper hydration. So you have to carry 3 liters of water along with you every day. That is a must. Daily आप almost 5 to 6 hours of trekking करने वाले हैं. So you have to ensure कि आपके backpack में 3 लीटर water होना ही चाहिए. Fourth important tips, make sure you have a good pair of shoes. एंड एंकल सपोर्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा है. गॉर्टेक्स के शूज आते हैं, यू कैन टेक दो शूज बिकॉज इट्स अ वाटरप्रूफ शूज एंड देन एंकल सपोर्ट भी होता है उसमें. मेक श्योर दैट यू ऑल्सो हैव एटलीस्ट 1 extra pair of shoes because that trek is very rocky.
so you never know कि कब आपके शूज में प्रॉब्लम आ जाए, and if there are any emergencies then you definitely need to have one more pair of shoes along with you. Fifth tip is carry a raincoat. It's pretty much required because वहाँ पे कभी भी snowfall होता है, कभी कभी रेन्स भी होती हैं, so you have to make sure that you are carrying a raincoat. और अपने बैकपैक को कवर करने के लिए भी you can actually purchase a small cover. वो वहाँ पे लोकली अवेलेबल रहता है. Even if you go to नामचे बाजार you will easily get that. इवन लुकला में भी वो आपको कवर्स एंड रेनकोट्स मिल जाते हैं, सो यू कैन टेक इट व्हाइल स्टार्टिंग योर ट्रिप और इवन यू कैन गो देयर एंड परचेज इट. इट डजंट कॉस्ट मच. सो गाइस, सिक्स्थ टिप है कैरी डायमॉक्स टैबलेट्स, बिकॉज कई लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, so it's very important to carry those tablets. Make sure that you are informing your guide before taking those tablets. But yes, I mean you won't get doctors या फिर कोई आपको वहाँ कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, but definitely your guide can actually give you a proper advice when to take those tablets and in what situation and circumstances you can actually consume those tablets. So it's pretty much requires always carry that because high altitude sickness का problem कई लोगों को आता है, सर दुखने लगता है, then sleep proper नहीं आती है, so there are multiple issues that you go through when you actually go above 4,000 meters. So definitely carry a Diamox. Seventh tip है take a proper insurance whenever you're going for a high altitude trekking. Make sure you have a proper insurance. तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं. कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स जैसे कि एक प्रॉपर पोलराइज्ड गॉगल लेना इम्पोर्टेंट है. देन यू नीड टू हैव अ सनस्क्रीन. If you like capturing videos and all, so just make sure that you have a good camera along with tripod, and you also need to have some camera holders along with you because कई बार आप चलते रहते हैं, so you can actually put those holders somewhere around your body and you can actually capture those beautiful moments. Clothing is concerned, definitely you need to have 4 to 5 layers of clothes, especially when you go beyond 4,000 meters. 3,000-3,500 meters तक आप 3 लेयर से भी काम चला सकते हो, बट डेफिनेटली 4,000 meters के बाद यू नीड अ प्रॉपर 4 लेयर, मिनिमम 4 लेयर क्लोथिंग. इसमें ये चीज आपको काफी सारे चैनल्स पे मिल जाएगी, सो आई डोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ इट, बट यस, undergarments is something which you need to carry at least 8 to 9 pair because वहाँ पे आप you have to change it every day. If not every day, just make sure that you are changing it every alternate day because bacterial infection होगा, then again आपकी तबीयत खराब होगी and you don't want to get into that, right? So just make sure that you are carrying at least 8 to 9 pair of undergarments. Now next tip is sticks. Sticks are equally important because कई बार लगता है यार sticks तो बुढ़े लोग यूज करते हैं ट्रैकिंग के दौरान, बट ऐसा नहीं होता है. इट्स हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग. आप डेली अच्छा खासा हाइट गेन करते हो, डेली 300-400 meters, एट टाइम्स इट इवन क्लोज टू 700 to 800 meters जो आप डेली कवर करते हो एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैकिंग के दौरान. So it's very important that you need to have minimum 2 walking sticks, okay, that you can get in Kathmandu as well. आपको लुकला या नामचे बाजार में भी मिल जाएगा, but you need to have those sticks. Otherwise आपके ankle और आपके knees पे बहुत ज़्यादा pressure आता है, and then I mean your body will start giving up. आप कई सिचुएशंस में ऐसा होता है, आप ऐसे ऊपर देखोगे and then you will realize कि इतना ऊपर मुझे जाना है आज. And then if you don't have those sticks, it's all on your feet. आपके knees बहुत इशू होते हैं, and रात में जब आप सोने जाओगे then you will realize how much pain you are going through. So just make sure that you have 2 sticks along with you, not 1, 2. एक दो और टिप्स हैं. काठमांडू से लुकला जाने के देयर आर मल्टीपल वेज. बेस्ट वे तो यही है कि यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू लुकला एंड दैट्स द बेस्ट that you can get, but the problem is वहाँ पे weather conditions keeps on changing and then there are times when your flights get delayed. हमारी भी फ्लाइट डिले हुई थी. हमने वहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे का वेट किया हमारी फ्लाइट के लिए, बट होता क्या है कि अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो वो आपको क्यू में डाल देते हैं, और जिनकी फ्लाइट ऑन टाइम होती है उनको वो लोग भेजते जाते हैं. So that is the problem. So आपका नंबर कब आएगा you never know. There are times when people have waited there for 2 days. But still they haven't got their flight. So what we did, we went through a road to हमने चॉपर लिया था. So वो बेसिकली जो आपके ऑर्गेनाइजर होते हैं वो आपको सजेस्ट कर देते हैं. They will tell you कि how much it is going to cost you.
उन्होंने जो कॉस्ट फ्लाइट का आपसे ऑलरेडी लिया रहता है काठमांडू टू लुकला का, वो उसमें आपका रिइंबर्स कर देते हैं. सो इफ देयर आर एनी एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू नीड टू पे, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू are carrying good amount of money along with you when you are going for EBC track. There are emergencies, there are points where you have to take alternative options, so definitely you need to have good amount along. Next tip है eating habits. So make sure जो भी वहाँ locally available है आप वो खाओ. Make sure your body is getting enough amount of energy. आप एनर्जी बार्स अपने साथ रख सकते हो, that will definitely help you. कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी अपने साथ रखते हैं, वो भी हेल्प करता है. बट येस, वहाँ का जो खाना है समटाइम यू वोंट लाइक इट, बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. जस्ट मेक श्योर दैट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप अच्छे से करते हो. देन लंच के लिए अराउंड 1:30 और 2 PM they will make sure that you are stopping at some point and then you can also have your lunch there. Everything is sponsored by the organizer. They will tell you कि जो भी आपने पैकेज लिया है उसके अंदर क्या क्या फूड आइटम आते हैं. And then if you want to buy something extra, you can definitely go ahead and purchase it and consume it. There is no problem as such. But make sure that you are taking proper diet, proper खाना खा रहे हो वहाँ पे, so that your body gets a good amount of. Also very important is regarding the toilets. I know काफी सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, but it's equally important. EBC में टॉयलेट्स का इतना इशू नहीं होता है, बिकॉज जिस भी आप टी हाउस में रुकते हो वहाँ पे देर आर इंडियन टॉयलेट्स प्लस वेस्टर्न टॉयलेट्स दोनों अवेलेबल होते हैं. बट यू टू मेक श्योर कि आप जब वेस्टर्न टॉयलेट्स में जा रहे हो यू हैव योर ओन टॉयलेट पेपर, बिकॉज वहाँ पे वो नहीं मिलता है. एंड इफ यू वांट टू परचेज इट डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू 10 times what you will get it in a normal situation. So इंडियन टॉयलेट्स में वो प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा. ऑफकोर्स पानी ठंडा होता है तो यू हैव टू मैनेज इट, बट यस पानी रहता है. एंड देन यू हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल, इंडियन एंड वेस्टर्न टॉयलेट्स. सो गाइस बाकी कुछ और भी टिप्स हैं जो माउंट एवरेस्ट के बारे में है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए रख दी हैं. यू कैन एक्चुअली रीड एंड गो थ्रू इट. दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टिप्स. बट जो टिप्स मैंने आपको अभी बताई इसमें से काफ़ी सारी टिप्स आपको यूजुअली नॉर्मल चैनल्स पे नहीं मिलेगी. और यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर इन अ गुड फिजिकल कंडीशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस ट्रैक. इट्स नॉट सो टफ, बट यस एक 12-13 दिन का ऑलमोस्ट डेली का 5-6 आवर्स का ट्रैकिंग रहता है. So guys, if you have enjoyed this video and want to hear back from me again, then please subscribe to this channel. Press the bell icon so that we'll keep you updated for our upcoming videos. And please write and suggest what do you want in our next videos. Thank you. All the best.